Ji, assalamualaikum everyone. It's Shoayb Khan and welcome to the live update of Crypto Affairs. It's 24th of January, almost 8 a.m. in the morning, and we're gonna be discussing where the market is headed, what's happening on the charts. Are we still bullish or bearish yet? What's happening in the forex? So let's deep dive into it. I'm not tagging anyone because it's early in the morning, but whenever you guys wake up, you're gonna see the major update, the major insights, the major bias, what's happening in the market. And till then, whoever is awake and watching this, like and subscribe this video. There's the Discord link, the Telegram, and the Twitter, and let's get started. All right. Okay, so here we are. Bitcoin पे हमारे पास just for the recap, we have this previous weekly resistance. We dropped down from there. We had our BOS right about at 41,362 और उसको ये कि हमने break किया on the daily chart एक yes we can say it's kind of like a clean break now if you can see it. ठीक है, क्योंकि अर्ली लाइक लेट आवर्स में जाके उसने कहीं ना कहीं जाके 39,500 पे क्लोजर करी. दैन कल अगेन हमने ब्लीड किया ऑलमोस्ट. वी वेंट टुवर्ड्स लाइक 38,500. आई सेट माई अलार्म देयर बिकॉज आई वाज वाचिंग सम ऑर्डर्स टू गो बाय देयर, बट वो अभी फ़िलहाल टैप नहीं हुआ है. 19-20 जो है बस उसमें वो चीज़ रही थी. एनीवेज अगेन उसके बाद ये कि इट्स स्टार्टेड टू पंप अ बिट एंड नाउ वी आर closing and hovering just under the 40,000. Now, if you see that, I'm just gonna give you a single move. ठीक है कि क्या मामला है, क्या बायस है, क्या चीज़ है, and then rest of it you will understand it pretty much clearly if you been following me in my PH series, in my updates and all of that stuff. एक चीज़ याद रखें कि जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, इमेजिन इफ़ देयर इज़ नो लाइन इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स जस्ट अ सिंपल चार्ट, सिंपल स्टफ. वी वर मेकिंग द स्ट्रक्चर द हायर हाइज, the highest high, and then we made a recent low, then higher low, then higher low, and then we made another lower low, and now we are in process of making a lower high. ठीक है, whether if you want to retest that BOS or come back here getting rejection, and then ultimately you have to go back down to this level at 38,500, 37 whatsoever, if we are talking about ये जो हमारी पूरी लिक्विडिटी की एक रन थी उसको क्लियर करने के लिए. सो दैट्स वाज हैपनिंग ऑन द स्ट्रक्चर वाइज. मैं कोई इतनी लंबी चौड़ी साइंस हैं वो बता के जो है इस तरीके से नहीं चलता. सिंपल एक लाइन, एक डॉलर वैल्यू, एक सिंपल स्टफ उसका. ठीक है, अगर उसको 3 आवर पे या 4 आवर पे आप उसको ट्रांसलेट करोगे तो वो समझने में आसानी हो जाएगी ज़्यादा कि इफ़ यू कैन सी द स्ट्रक्चर इज़ बीइंग बेरिश हियर. ठीक है, वी हैड pretty much lacking the volume here, and then उसके बाद वो ड्रॉप करना शुरू करता है, then वो अभी बाउंस हो रहा है. तो ऑफ कोर्स बाउंस होगा बिकॉज यू आर नॉट एंटिसिपेटिंग अ कैपिटुलेशन राइट एट दिस पॉइंट. कैपिटुलेशन या पैनिक सेलिंग जब होती, जब हम क्लीन ब्रेक कर देते हैं. इंस्टेड ऑफ दिस BOS वी वुड हैव क्लोज दिस कैंडल ऑफ अ डे बिफोर यस्टरडे राइट अबाउट हेयर. ये अगर इतनी बड़ी कोई कैंडल यहाँ पे हो जाती तो ये कि फिर नेक्स्ट जो था हमारा वो अगले जो फॉलोअप में हमारे पूरे वीक होते वो आपका बाय द एंड ऑफ द वीक एंड यू विल बी एट अराउंड $30,000 ऑफ प्राइस. ठीक है, तो वहाँ तक वो जाके वो चीज़ हो जाती. सो ऐसा नहीं हुआ. सो ऑल गुड विद दैट. सो अभी जो आप कर रहे हो, द कोड वर्ड इज़ यू आर हैविंग अ बेयरिश रिटेस्ट एट द मोमेंट. इंटरनल लिक्विडिटी, यस स्ट्रक्चर वाइज इंटरनल लिक्विडिटी है, लेकिन क्या वो वहाँ तक जा रहा है, उसके लिए उसको BOS के ऊपर स्लाइडली यहाँ पे अगर स्टेबलाइज होता है वो 1-2 दिन तो वो जाके इंटरनल लिक्विडिटी पे हो जाएगा. अच्छा, कुछ लोग नहीं, मतलब ज़्यादातर लोगों को जो मैंने देखा था ट्विटर पे, वहाँ पे वो सारे लोग ऑलमोस्ट 40K से लॉन्ग कर रहे थे एंड दे वर टारगेटिंग 45-46K तकरीबन, कि वो ये वाला स्टेप बाय स्टेप ये बन गया, ये फलानी ट्रेंड लाइन है, ये इतने स्टेप पे इसने बाउंस ले लिया है एंड नाउ इज़ गोना बी गोइंग टुवर्ड्स द 45K 46K. एंड पॉइंट इज़ दैट मैं उधर थोड़ा वो था कि बिकॉज वो मेरी BOS पे जो है वो उस टाइम पे सस्टेन कर रहा था. अगेन मेरी अपडेट में ML में जो मैंने दी थी, यस इंटरनल लिक्विडिटी मार्क थी और नीचे ये कि बहुत क्लियरली था कि 38K पे जो हमारे ऑर्डर्स हैं
वो हिट होने, सो लेट्स वेट फॉर इट कि अगर लॉन्ग्स अगर बिल्ड होंगे भी तो लेट्स से कि वहाँ से भी किया जा सकता है। इंस्टेड दिस इज़ नॉट द टाइम कि 40K पे किया जाए। बिल्कुल बी पे कौन लॉन्ग करता है भाई, जहाँ पे वो बिल्कुल ब्रीच होने की पोजीशन में, एंड एट द एंड स्टॉप लॉस हंट हुआ पूरा, और जो लोग वहाँ से वो 45-46 का एक्सपेक्ट कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली दे आर आउट ऑफ दैट ट्रेड। सो उसका रीज़न जो था सिंपली यही था, बिकॉज इफ़ यू look at the market clearly, if you look at the scenarios in a way how the price is translating it to you, then you'll see, okay, this is what's happening. The price is going like here and then falling off from the rejection and bouncing off the support, just because you are starting to follow the structure based on what the price is telling you. So again, down, sideways, a little bit up, there's a bearish retest, then down again, then a little bit up, and then down. Now you're in that little bit up of a movement here. So either if you want to translate it into that, uh, the three liquidity drive, the dead cat bounces, whatsoever, tomato, however you want to call it, but that's how it's happening. So it has to come back here, right about this zone, ठीक है। ऑलमोस्ट उसने इस विक को तो एक तरीके से पूरा कर लिया है, राइट अबाउट दिस वन, ठीक है, 40,307 वाली। तो आई एम गोना क्लीन माई चार्ट हेयर, इट्स करिंग मैसी, राइट। सो ये वाला जो जोन है आपका, ये मेजर अब रेजिस्टेंस वाला प्ले आउट करेगा, ठीक है, ये इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे आके ज़रूरी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही बुलिश हो जाना कि नहीं बस अब वो ऊपर जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। थोड़ी तसल्ली से सेम चार्ट को ज़रा हौसले से ज़रा देख लेगा कि स्ट्रक्चर आपका क्या बुलिश हो गया। बुलिश स्ट्रक्चर कैसे होगा कि ये वापस जाना यहाँ पे शुरू करता है, एंड देन इट्स स्टार्ट टू मेक a higher high and higher low, and then is stabilized towards this BOS। तो ये क्या फिर हम इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ वो कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि लाइक इट विल गोना गो राइट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट इंटरनल लिक्विडिटी, एक ही तरीके से वो उस पर चले जाए। अगर वो हो रहा है तो ये कि दैट मीन्स वी आर एंटिसिपेटिंग सम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इनटू दैट, एंड वी आर एंटिसिपेटिंग के डायनेमिक लिक्विडिटी अगर एम आके प्रोवाइड कर रहा है तो वो चीज़ वहाँ पे समझ आती है। लेकिन एट द मोमेंट देयर इज़ अ वाइड हेयर, ठीक है। प्राइस वाइज आई एम नॉट सीइंग एनी लिक्विडिटी, आई एम नॉट सीइंग राइट इन दिस ड्रॉप, even if I switch towards the 3 hourly chart here, I'm not seeing any fair value gaps and whatsoever. So I think there's a void. It will gonna go back up to this point, and then we'll be continuing the downward trend from that point, ठीक है। So that's what's happening in the cryptocurrency, that's what's happening with the Bitcoin. We have a couple of news aligned on 25th of January. All right, tomorrow we have the GDP growth rate, quarterly we have durable goods order, month to month, and then we have a news on 26th, which is personal spending, personal income, and core PC price index. So it's going to be pretty volatile for the DXY. Well, I'm not going to be translating the same stuff when it comes to the cryptocurrency, because I know I place the decentralized currency where it belongs, and I place the centralized currency, the currency pairs and the stuff which is being influenced by the dollar, into the another basket. All right, so do not mix these two stuff. Yes, for the stupid people, like they kind of translate the dollar movement, the DXY index, into the Bitcoin. Couple of hundreds of them kind of make some volatility of like $100-200, but Bitcoin is not influenced by the DXY itself. The only influence, the only inversely correlation you can see is from the USDT dominance, the tether index, the tether dominance right in the crypto market, which holds the value in the market cap itself, right? So if you start to finding coherence, like, oh my god, my dog just vomited, so Bitcoin has to fall like $25 on the 3 hourly chart at 12 a.m. in the morning, well, it's not gonna work. It's just gonna be pretty stupid thing to say. So be watchful where you see your coherences, be watchful what you're aligning your charts with. All right, so that's what's happening with the Bitcoin. Now let's move towards this stuff. The gold here. All right, I had my POI a couple of days, actually on Friday, and we were pretty much closing that, sitting on a fence. It barely moved, it went up,
gave us the pretty move to hunt right about here, and then the POI was right about, if I'm not wrong, it was right at $218. Sorry, $2018. I think that was the POI. All right, probably mark this one. So it bounced right from it, and then they had a good run of like 14 $16 of a move, and then on the Monday it got completed, and then all good with that. So since then, been a choppy ride here. We are just hunting itsy bitsy of internal liquidities here. It just, the entire move is based on like $8. It's 15-minute charts. I'm pretty zoomed in, so don't get carried away with that. Oh my god, it just like 30 40 $60 a move. No, it's not. It's just ranging in between. If you just calculate it right from this top or this top or this top and below this point, it just like $8 $9. That's it. So it's the structure is pretty choppy. If you look at the 3 hourly chart here, I'm gonna close some session breaks here. The HTF retesting level is still valid, and hopefully we're gonna be making the another low right about this zone. All right, we had this false harmonic pattern, and if you have seen my videos about this, the only video, not videos, the only video of harmonic pattern, you're gonna see why it's a false one, because the base has been kind of skewed and tilted towards the left side, the B point, and if you start to draw like this, if you force it to, well, you're never gonna get the B point. All right, so there's a gap, and then it went down. So apart from that, we can say yes, it's kind of a making here another harmonic. All right, the B point, sorry, the D point can lie anywhere, and any point right about here, because the C is not external, it's internal. It's lying under the value of A, so D should be internal too. So there's a harmonic that I'm anticipating, and let's see how it will gonna turn out. But the point is, if it's gonna be losing the $2,000 of price value, it's gonna be coming back down again. The STF retesting level will be tested. Same goes with that liquidity profile. If we had a clean break and we close, and kind of a look at it as a BOS, then it will gonna be coming back down there, and the bearish momentum will be continued. So far the momentum is still bearish. Structure wise, same stuff: lower lows, lower highs, lower lows, a higher high followed by a lowest low in this entire zone, and now you're making again the highs here. So it has to make another low right below this point to this HTF retesting level, where we can say, all right, the structure is being deemed possible, whatever and however we are projecting it. All right, so I guess a couple of people are here. I don't think there will be queries right about at this point. Waking up to this, yeah, thank you so much, man. By the way, I just hit 9,000 subscriber, and I believe we can make it, man. I believe we can make it to 50k, 100k. Who knows? Some somewhere around down the line, I'm gonna be pasting my silver or golden or maybe platinum, but I'm right about there. One can wish though. So anyways, thank you all for the love. Thank you all for the utmost appreciation. I'm humbled. I'm really appreciating it. The 9,000 beautiful souls, man, who could have dreamed about it. Right, so we had a query: what was your single most profitable trade, if you're okay sharing it? uh, my single most profitable trade, well, that's the hard one. If you're gonna bifurcate about the year wise, then we can say something about it. Then we can see uh, back in 2017-18, I believe it was an XRP one, provided with the fact कि जब आप लाइक उस पर जो है एक पोर्टफोलियो के हिसाब से जब आप कर रहे होते हो उस पर, तो आई हैड अ गुड पोर्टफोलियो, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से। तो XRP के एक वो ट्रेड थी, देन 18-19 वाज लाइक या दैट्स ओके, 20 देन
इथीरियम आप कह सकते हो इफ़ यू आर काउंटिंग लाइक स्पॉट बैग्स, तो इथीरियम मे बी आई बॉट इट राइट अबाउट एट इथीरियम की मेरी फर्स्ट बाइंग थी $65 पे, आई सोल्ड एट 700 पे। फिर उसकी एक जो हल्की रिट्रेसमेंट हुई थी 600 के लेवल पे, अर्ली 2021 आई रिमेंबर या लेट 2020 था वो, और वहाँ पे बाइंग करी थी एंड आई सोल्ड राइट एट द टॉप ऑफ 4647 पे वो इथीरियम का जो है वो बैक हो गया था, इफ़ यू कैलकुलेट लाइक इन दिस सिनेरियो। उसके अलावा सोल की बाइंग थी $3 पे, ठीक है, और उसको सेल किया था 140s में, फ्रॉम $3 टू 140s, बट वो जाते हुए नहीं, वापसी आते हुए ये था। और आई डोंट नो मैन, लाइक इस स्कैटर्ड लाइक ओवर द कोर्स ऑफ कपल ऑफ ईयर्स, तो आप उस पर कह सकते हो होल्डिंग्स, ट्रेडिंग, स्काल्पिंग, तीन अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू रिमेंबर। 19 में वाली भी एक अच्छी ट्रेड थी, क्रैश के अगले दिन, नॉट 19 को क्रैश आया था उस दिन, बाइंग जो करी थी मैंने वो 21 को वो मैंने करी थी, तो इट मेड मी लाइक टोटल पोर्टफोलियो का तकरीबन 70-80% वो हो गया था ऑन दिस स्पॉट, तो इट वाज द गुड वन, या थैंक्स मैन, आई अप्रिशिएट इट। ऑलराइट, सो somebody asked me about gold. I already had a detailed analysis. Let's talk about the GBP, New Zealand dollar. Uh, had this POI, had a clean break towards it, that it gave like 2-3 instances to exit in profit, pretty much done with that. Then it had a move of to like $2,000-$2,500 of pips of move, and we had our rejection zone. All right, we had our daily here, then another one here, and then another one here. So it got rejected really from the side value from the top one. You can count the middle one if you're counting these two wicks, and then if you're counting the bodies, we had a rejection there. So if we close this candle like in red, today or like tomorrow's right under this daily, then it's a you can say it's a BOS, and then we'll be coming back to 20 2.06 or 2.055 level, right about this one. This will be the support. All right, so that's what's happening here. Apart from that, euro has been really choppy and boring though. Finally exited that zone here, this highs and lows. We hunted this high, SL hunted, and then we went right about this range, hunted the SL here again, and now coming back to this range again. So pretty boring move. We are still stuck here, not making any higher highs, higher lows. We are still stuck in a sideways move. So as for the confluences, we have the order block at 1.08 till 1.07 at 39. All right, that's like 160 170 pip of order block, and then we have this untested day open, but I'm not really interested in that, to be honest. I even removed my alarm from there because it was something that already hunted the liquidity, and then we had our market structure break right from this level. So the untested day open doesn't make any sense to be filled as a confluence, but that's okay. We can at least mark. All right, so what's happening in Ethereum? सोल बाइंग रेंज फॉर लॉन्ग टर्म, देखें सोल ने जो है आपका बुल रन वो ऑलरेडी एक वो लिया हुआ है। अगर सेफ बैट करना चाहते हैं तो 15 12 13 इसके अंदर देख लें। बाकी मैं पर्सनली जो है मैं कोई प्रेफर नहीं करता, बट देन अगेन मेरी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है, इट्स अप टू यू। ठीक है, सो मैव यूएसडीटी, like and share this video though. I'm sharing the link of Discord, Telegram and Twitter. All right,
मैव यूएसडीटी में हमारे पास लिक्विडिटी प्रोफाइल थी, ठीक है, वो टैप हुई है, रिजेक्ट हुई है एंड देन वी वेंट अप। अब इसके हिसाब से हम ऑलरेडी एक डेली से बाउंस भी नीचे से ले चुके हैं, ठीक है। डेली पे हमारे पास सपोर्ट थी एट 2042, ठीक है। सो इट्स गोइंग अप, मेकिंग हायर हाइज हायर लोज, और अभी तक जो हमारा स्ट्रक्चर एक तरीके से बेरिश हुआ नहीं है, तो यू हैव टू लूज राइट एट दिस लेवल, ठीक है। बॉडी पे कर लें 44 पे, बॉडी पे कर लें 4483 पे, या विक पे कर लें 44 पे, डजेंट मैटर। लेट्स कंसिडर द विक हेयर। यहाँ से ये नीचे की तरफ आना शुरू करता है, देन विल बी कमिंग बैक टू दिस जोन एंटायरली। अंटिल देन इट्स गोना चॉप अ बिट, being a little bit bullish. So that's what's happening in the MAV. Zen for bull run. Let's look at the live weekly chart. कर सकते हैं इसको राइट अबाउट जिस जोन में खड़ा हुआ है, 1-2% अगर बाय करना चाहता है तो देख लें। नीचे की तरफ अगर इधर 5.96 की रेंज में बाय करना है तो दैट्स ओके, एंड द फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 22.72, ठीक है। उसके ऊपर स्टेबलाइज करता है देन 45, ये रेंज है आपके पास, एक्चुअली 41 if you consider this harmonic. So that's what's happening with Zen. So USDT, see for yourself what's the daily charts been telling you. You got launched, you had a top of almost $2, then you went all the way down towards 35 cents, and now you're sitting at 1.16. तो आपके पास इसकी करेक्शन करनी है, क्योंकि ये इम्पल्स जो है पूरी इस वाली की करेक्शन करके आई है, तो आई थिंक 80 सेंट 70 सेंट्स हम देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, क्विक अपडेट ऑफ 20-23 minutes I believe, and फिर जो भी होता है I'm gonna be sharing the charts in ML also, updating all the stuff. बिटकॉइन का डिटेल में मैंने बता दिया, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना क्लस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को देख लें, सिंपल स्ट्रक्चर को देखेंगे वो क्या कर रहा है, एंड देन इट विल बी pretty easy for you to understand what's happening. अपार्ट फ्रॉम दैट ट्विटर पे मैं चार्ट्स वगैरह अपलोड कर दूंगा, सारे जो भी हैं रिक्वेस्ट वहाँ पे आस्क मी एनीथिंग में बता दीजिएगा, एंड या सो दैट्स ऑल अबाउट इट, एंड आई एम गोना सी यू सून। सो चिल करें, नो इशू इन दैट, कोई मार्केट अभी कहीं नहीं जा रही, जो भी अपडेट होती है दैट आप कर बी अपडेटिंग यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को, एंड मेक मी रीच लाइक हाउ मच 10K first and then 50K next, and then we're gonna be sharing one Bitcoin among the followers. So that's all about it. Don't let the market surprise you. Allah Hafiz.